Vidasham student, now at the question number 3. So let's read the question. The relative humidity in percentage of a certain city for the month of 30 days was as follows. तो 30 days के लिए हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसका एक हमारे को जस्ट एक हमारे को कॉलम वाइज हमारे को लिख के दिया डेली वाइज. अब कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. वेरी गुड. तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. तो इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए, क्लास साइज और स्टार्टिंग क्लास. सो स्टार्टिंग क्लास के लिए मेरे को रेंज होनी चाहिए मालूम. तो रेंज में मेरे को मिनिमम मालूम होना चाहिए और मैक्सिमम मालूम होना चाहिए. सो लेट्स सी द मिनिमम इज 89. हाँ, मिनिमम इज 84, 84, 84, 84, 84, 84. सो 84 मिनिमम है. तो दैट मीन्स मेरा 84 से चालू होगा. तो मेरी स्टार्टिंग क्लास कितनी हो जाएगी, 84, और क्लास साइज कितनी है 2. तो मेरा कितना हो जाएगा 84 से 86. क्योंकि 84 से 86 दे रखा है, दैट मीन्स क्लास साइज इज 2. सो मेरा क्लास साइज कितना हो गया, मेरा फर्स्ट कितना बन गया 84 से 86. अब मेरा मैक्सिमम कितना है 97. 97. सो 97, 97. तो मेरे को 97 से ऊपर जाना है. दैट मीन्स 86 टू 88, 88 टू 90, 92 टू 92, 92 टू 94, 94 टू 96 एंड 96 टू 98. इसमें आ गया हमारा 97 आ गया ना इसमें, दैट कम्स इन द 97. अब ये भी बात क्लियर हो गई. अब ये मेरा क्लास क्या है, क्लास किसके लिए बनाई है, क्लास के लिए आप लिखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज. करेक्ट. अब यहां पे लिखेंगे भाई टेलीमार्क्स फ्रीक्वेंसी. करेक्ट. सो अब हम लोग काउंट करना चालू करेंगे. सो 98.1. सो 98.1 98 से भी ऊपर है. सो एक और क्लास बनेगी 3, दैट इज 98 टू 100. एक और क्लास बनेगी क्योंकि 98.1 भी है. सो 98.1, 89.2. याद रखिएगा 86 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें इंक्लूड होगा. करेक्ट. ये पॉइंटर याद रखिएगा. सो 89.2, 96.2, 98.6, 92.3, 92.1, 99.2, 97.1, 84.9, 90.3, 93.5, 93.5, 90.2, 86.5, 86.5, 92.7, 95.7, 95.3, 95.1, 98.3, 92.9, 92.9, 97.2, 97.3, 96.3, 93, 96, 93,
हो गया है 94.2. uh, 94.2, 95.1. So 92.1. ये हो गया 7. 95, that is 95.1, 97, 5 and 89. 89 कहाँ है? 89. So 1, 1, 2, 2, 95.2. Correct? And that means 5. So let's make the telemarks. 1 into the frequency 2, 2, 7, 6, 7, 4. 1, 2, 4, 6, 13, 19, 26, 30. So that comes to 30. So now the further questions the is asked represent the data. ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया. Which month or the season do you think the data is about? So we think so we can say that it is a rainy season. So we can say that it is a rainy season, correct? Do you think this data is which month or season do you think it is a rainy season? What is the range of the data? So range of the data is will be what is the maximum is 99.2. तो रेंज क्या होती है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम 99.2 minus 89. So 99.2 ये ना? No, 99.2. Yes, 99.2 and minimum is 89. 89 से नीचे है, हाँ होगा ना 82, 84 होगा ना, 84.1 होना चाहिए. 84 से अपन लिया ना, so 96, 9, 84.9. 84.9. तो 12 में से 9 गए 3, that is 8, 14.3. So range is coming to 14.3. Yes, answer is correct. The range is coming to 14.3. So this is the making construction of the. It is something bigger job, but still because we don't know. As a teacher, I cannot say that in which stream you are going forward. Nowadays, it is a computer time, but still, this math was been made when there was no computers. Everything was done by the human mind and with the hands. So
and even no calculators also at that particular time. Calculator was invented later on. Check. Note it down, students. Then we move to the next question.